it is about the elasticity of the demand. So first of all, we should know what is the elasticity of demand. This lecture number is actually how I prepared the slides. It's not exactly our seventh lecture. Anyhow, we shall first discuss the elasticity of demand. What is it? What are its degrees? Then its measurement, its determinant, and if we had time, then we shall also discuss income and cross elasticity. So this is the complete lecture outline. Let's see how much we can cover it in today's session. Let me put on that. Yes, recording is on. So first of all, elasticity. Students, we know from the law of demand that when price decreases, the quantity demand increases. And when the price increases, the quantity demand decreases. Other things remain the same. This is what the law of demand says. However, what's missing in the law of demand is that it just tells us if P will increase, the QD will fall. But how much? Let's say if the prices increase by 10%, a good that was of rupees 100 is now priced rupees 110. How much the quantity demand of that good will decrease? This is important. This is important from producer point of view, from government point of view, and from consumer point of view. Everyone. From producer point of view, by this, the producer can have an idea whether an increase in price will result in increasing the revenues or profits, or it will result in opposite. Similarly, it can give the government an idea about the tax collection, that if there is an increase in the prices of the goods and consumer are consuming less goods, then definitely it will affect the sales tax plus the corporate tax as well. Similarly, when government does some tax changes, it also measures the response, how the people will respond to this. And that response actually tells them what will be the net impact of this increase or decrease in the tax rate. So knowing the response or measuring the response of an increase or decrease in the quantity demanded because of a change in price is important. But the law of demand doesn't provide us an answer to this. The law of demand simply tells us if this will decrease, this will increase. How much? No, no. Complete silence in this. So, just to measure the response, we have the concept of elasticity. So, I would like to ask, are you clear what why we need the measure of elasticity? Are you clear about it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. सर आप एक मतलब रिपीट कर दें, थोड़ा नेट प्रॉब्लम था. अच्छा, तो चलो मैं रिपीट कर देता हूँ. तो बेटा बात ये है कि आई जस्ट टोल्ड यू दैट लॉ ऑफ डिमांड सेज कि प्राइस इंक्रीज होगी देन क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज. ठीक है, they move in opposite directions, but it doesn't, it just gives you the direction of the response. It doesn't give you the measure of response. It doesn't give you that. For example, if the price of the good will increase by 20%, how much the quantity demand of that will decrease? The law of demand doesn't give us the answer, but to finding out the answer of this is important. It's important because it affects the firm's revenue, firm's profits, and then ultimately firm's strategies, marketing strategies, and all that. It affects government revenues. It affects consumers as well. So knowing this or measuring the magnitude of the response is important, but this is not answered by the law of demand. So we need a measure that can help us with this. And for that, we have elasticity. Clear now? Yes, sir. Okay. So by word meaning, elasticity measures the response of one variable due to change in another variable. For example,
And now you are seeing, now you are observing that the weather conditions are changing. Temperature थोड़ा सा cool down होता जा रहा है. It's getting a little colder. So it will have an effect. This change in the temperature will have an effect on the sales of, say, ice creams. So by the elasticity, we can measure how much a change in temperature affects the sales of ice cream. It just measures the response of one variable because of a change in another variable. Your independent variable changes, it causes a change in dependent variable, and elasticity measures this responsiveness. Got it? Yes, sir. Okay. So now हमारा जो our measure, how we can measure this, this is the elasticity of first variable with respect to second is, we divide the percentage change in the first variable by the percentage change in the second variable. So a percentage change in a variable, how that is measured? That is measured by change divided by its initial value multiplied by the 100. For example, let me come to the board to tell you about this a little. For example, the value of one variable changed from, let's say, 10 to 12. So we want to measure the percentage change in it. So to measure the percentage change, we will use the formula which is change, and for the change I am using this symbol. ये डेल्टा मैंने बनाने की कोशिश की है, it's just divided by its initial value. I hope by the end of this session I would be expert in writing on this. So just bear this. So इसको हम किस तरह करेंगे? Change कितना आया है? From 10 to 12. Final minus initial. We measure the change as this. Final value is 12. Initial is 10. So we have 2 divided by its initial value, which is 10. And to present it in percentage form, we always multiply it by 100 and put the sign of percentage. So by doing that, we can see that it is around 20% change. Got it? Yes, sir. Okay, so this is how we measure the change. सर Yes. चेंज नेगेटिव हो सकता है नहीं? हो सकता है बिल्कुल. अगर ये 10 से फॉर एग्जांपल 6 पे आ जाता तो चेंज आपने यू मस्ट ऑलवेज मेजर द चेंज बाय फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. और इसका ओके सर, थैंक यू. और इसका एक सिंपल ट्रिक ये है, इफ देयर इज एन इंक्रीज द चेंज इज पॉजिटिव एंड इफ देयर इज अ डिक्रीज चेंज इज नेगेटिव. ओके. सो अच्छा सर, ये क्वालिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी 20% या सॉरी, जो आपने ये 10 से 12 जो हमने प्राइस बढ़ाई है उसके बाद हमने जो परसेंटेज निकाली है क्वालिटी डिमांड, वो क्वालिटी डिमांड डिक्रीज होगी 20%? नहीं, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया. मैंने जस्ट आपको ये बताया कि चेंज कैसे मेजर करते हैं. जस्ट दिस. ठीक है. वी हैवंट टॉक्ड अबाउट कि ये प्राइस में चेंज था या क्वांटिटी में चेंज था, क्या था. ठीक है. Okay, so now the elasticity of demand. Definitely elasticity measures the response of one variable due to a change in another variable. And elasticity of demand means the change in the quantity demanded due to a change in price. I told you it is a change in independent variable that causes a change in dependent variable. So in the law of demand, we know that the price depends upon, the quantity demand depends upon the price. So price is your independent variable and the quantity dependent is your dependent variable. So if the price changes, how much the quantity demand will respond? This is measured by the elasticity of demand. And we have the formula, that is the percentage change in QD divided by
the percentage change in P. Students, please use mic. Please use mic to ask the question. I may not be able to read the chat simultaneously. It just disturbs. Okay, so it's simply the ratio of change in the quantity demanded due to change in price. Now we have what about the degrees of the elasticity of demand? If the quantity demand responds more, its responsiveness is higher, then we say its elasticity of demand is greater than 1, or it is elastic demand. For example, if there is a 10% change in the demand and the quantity, if there is 10% change in the price and the quantity demand changes by, let's say, 20%, then the change in the quantity demand is higher as compared to the change in the price. In this case, we can say that the demand for this particular commodity is elastic. We also categorize commodities by the elasticity. I will come to that later. Next, if there is an equal change in both, for example, a rise of 10% in the price resulted in a fall of 10% in the quantity demanded of any good, then 10% divided by the 10% answer would be 1. So it is called unitary elastic demand. And if the quantity demand response is very low as compared to the change in the price, then we say it is inelastic. You got it? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके आई अज्यूम कि आप सबको रिप्रेजेंट करें, बट किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन. नाउ जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम, आपने क्या करना होता है इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए? आपने क्वांटिटी जो आपकी डिमांड कर रहा है, जस्ट गेट 2 पॉइंट्स ऑन दैट. किसी भी जगह पे आप 2 पॉइंट्स ले लें, दोनों को कनेक्ट करें, प्राइस एक्सिस से भी और डिमांड के एक्सिस से भी, एंड देन सी कि प्राइस के एक्सिस पे उसका चेंज कितना है और डिमांड के एक्सिस पे उसका चेंज कितना है. If the change on the demand axis, that is on the x-axis, is greater, then it means this is elastic demand. Got it? सर रिपीट कर दें. अच्छा, ये देखो बेटा, आपने एक डिमांड कर्व बनाई है, ठीक है. अब आपने क्या करना है, उस डिमांड कर्व के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लो अपनी मर्जी से एंड जस्ट कनेक्ट बोथ पॉइंट्स विद बोथ एक्सिस. जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिया इसको भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कनेक्ट कर दो. सेकंड पॉइंट जो लिया उसको भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कनेक्ट कर दो. नाउ ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और ऑन द वाई एक्सिस यू हैव द प्राइसेस. सो अब आपको पता लग जाएगा कि प्राइस की साइड पे कितना चेंज आया एंड एज कंपेयर टू दैट क्वांटिटी की साइड पे क्या चेंज आया. If the change on the quantity is greater, then it is elastic demand. सर हम जी यही सर, बात समझ आ ग्रेडियंट से गई. नहीं बोल सकते. Sorry? यही बात हम ग्रेडियंट से नहीं बोल सकते कि जितना ग्रेडियंट कम है उतनी इलास्टिसिटी कम है. वो अभी हम उस पे बाद में आएंगे. सही है सर. उसकी मैथमेटिकल मेजरमेंट पे विल कम टू दैट लेटर. अभी जस्ट हम विजुअल इंस्पेक्शन से देख रहे हैं. Now the other case, if the demand curve is like this, then again you put 2 points on the demand curve and see how much there is a change in price and how much there is a change in quantity demand. As far as my observation is, the change in the on the price side and the change on the demand side are almost equal. So in this case, it is unitary elastic demand. That is, the elasticity of demand is equal to 1. सर आपकी कनेक्शन लूज हो गई सर, वापस आप प्लीज डिफाइन कर दें सर. Okay, अब आवाज आ रही है? Can you hear me now? यस सर. Okay, okay. So again, वही हमारा मेथड होगा. हमने जो पहली डिमांड कर्व ड्रॉ की है, which is on your screen now, it is a little flatter. अगर हम इसको थोड़ा सा इससे स्टीपर कर देंगे तो क्या होगा, वे सेम होगा.
यू हैव टू प्लेस 2 पॉइंट्स, आप दो अपनी मर्जी से पॉइंट सेलेक्ट करोगे डिमांड कर्व पे, और दोनों पॉइंट्स को यू शुड ज्वाइन विद एक्स एंड विद वाई एक्सिस, एंड देन आप ऑब्जर्व करोगे कि प्राइस एक्सिस के ऊपर चेंज ज्यादा है या डिमांड एक्सिस के ऊपर चेंज ज्यादा है। ठीक है, अगर डिमांड, योर फोकस शुड बी ऑन द डिमांड एक्सिस। इफ on the demand axis the change is greater, it means elasticity is greater than 1, and if on the demand axis the change is less, then the elasticity is less than 1. So सर हमें चेंज चेक करना है या परसेंटेज चेंज चेक करना है? अभी हम चेंज चेक कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज जस्ट अ विजुअल। सर तो चेंज, सर तो क्या चेंज देखने से हमें पता लग जाएगा कि मतलब चेंज देखने से कैसे पता लगेगा? जस्ट वी कैन गेट के ये इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, और इक्वल टू 1 है, जस्ट दिस। वी कैन नॉट हैव द प्रिसाइज मेजर ऑफ दैट कि 1.5 है, 1.8 है, 2.7 है, वी कैन नॉट टेल दिस, वी कैन जस्ट टेल इज इट ग्रेटर देन 1 और इज इट लेस देन 1, जस्ट ये। सर ये चीज फिर स्केल पे डिपेंड नहीं करेगी सर, हम स्केल कितना ले रहे हैं उस चीज पे, अगर स्केल लेट सपोज वाई एक्स पे ज्यादा, अगर लेट सपोज एक्स एक्स पे फिर कम ले, तो फिर उस मुताबिक तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये 1 से ग्रेटर है लेस है। नो 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 नो, स्केल के ऊपर डिपेंड इसलिए नहीं करेगी कि ऑन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, वो आपका स्केल कांस्टेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 10 का स्केल दिया हुआ है वाई एक्सिस पे, और आपने 100 का स्केल दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, तो ऑन अ सेम एक्सिस योर स्केल डजंट चेंज। अगर आपने 100 का लिया तो 100 का ही रहेगा, तो जब आप उसको परसेंटेज चेंज में जाके कन्वर्ट करोगे, इट विल रिमेन द सेम, ठीक है। लुक, एक जगह पे आप 10 पे हो, तो आपका 50% चेंज या 50% इंक्रीज क्या होगा? 50। दूसरी साइड पे आप 100 पे हो, अगेन योर 50% increase will be on 150, so it will automatically adjust it. Got it? यस सर। वरना इसके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स खुद करके देख लेना, यू विल गेट इट, ठीक है। ये थोड़े एक्सपेरिमेंट करो इसके खुद, डिफरेंट स्केल से ड्रॉ करके, एंड देन यू कैन चेक इट। बट आई कैन टेल यू कि इसका ये विजुअल इंस्पेक्शन जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि इसकी रेंज 1 से ग्रेटर होगी और 1 से लेस होगी, ठीक है, इन एब्सोल्यूट सेंस, ठीक है। इट डजंट गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर हम बाद में आएंगे। नाउ द थर्ड केस, अब हमने क्या किया, उसको ज्यादा स्टीपर कर दिया। जब ज्यादा स्टीपर किया तो वी कैन हैव द 2 पॉइंट्स, और उनको दोनों एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो वी कैन सी कि प्राइस पे तो रिस्पांस बहुत ज्यादा है, बट उसका जो रिस्पांस ट्रांसलेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यू, दैट इज वेरी लेस, सो वी कैन से दैट इट इज inelastic, or here the elasticity of demand will be less than 1. Fine. Hello. Yes, sir. Okay. यस सर, यस सर। Okay. Good. मैंने कहा सर ये शट फिर डाउन। लाजमी भी नहीं ना सर कि यहाँ पे जो हमें जो मिल रहा है लाइन ये फिर स्ट्रेट ही हो हमेशा? नहीं, लाजमी नहीं है, वो कोई कर्व भी हो सकता है मतलब? आपने भी फरमाइश की, बस 2 मिनट मुझे दे दो, आपकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ, ठीक है। Okay, okay. Now you can see that the price is changing, but there is no change on the demand. तो डिमांड का रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, और इलास्टिसिटी जीरो होगी। और इसका अगर आप अपोजिट केस करोगे, तो वहां पे क्वांटिटी डिमांड चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और प्राइस में चेंज जीरो है। सो मैथमेटिकली हमारा फार्मूला क्या था? चेंज इन QD डिवाइड बाय चेंज इन P, परसेंटेज चेंज इन P। तो परसेंटेज चेंज इन P इज जीरो नाउ। ये इनफिनिट हो जाएगा सर। हाँ, तो जब आप किसी भी चीज को जीरो पे डिवाइड करोगे, इट विल गेट इन्फिनिटी, ठीक है। यस सर, इसका, ये इनफिनिटी हो जाएगी सर। हाँ जी, तो इसका मतलब है प्रोड्यूसर जितनी मेहनत करेगा उतना वो बेच लेगा, ठीक है। नाउ वी कम टू द मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए वी हैव द टू मेथड्स, ब्रॉडली द टू मेथड्स, वन इज द पॉइंट इलास्टिसिटी एंड अदर इज द आर्क इलास्टिसिटी। We use point elasticity method when there is a very small change in the quantity demand and in the prices, when there is a small change. So हम ये कहते हैं कि अगर हम इन दोनों changes के point को लगाएंगे on the demand curve, the points will be very very close to each other.
इतने क्लोज होंगे कि शायद हम थोड़ा सा दूर से देखें तो शायद हमें एक ही पॉइंट मिले, ठीक है। सो आइडिया इज फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड स्मॉल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, देन वी यूज द पॉइंट इलास्टिसिटी। और पॉइंट इलास्टिसिटी के आगे फर्दर दो मेथड है, वन इज द परसेंटेज मेथड, अदर इज द ज्योमेट्रिक मेथड। And arc elasticity, this is used to when the change is significant, change is large, visible change है। तो इसके भी आगे further दो method है, first is the midpoint formula and second is the total expenditure method, or we can say the total outlay method। So now let's start with the point elasticity. Just as I told you that it is for the small change in the price and the quantity demanded. And there are two methods. First is the percentage method and second is the geometric method. So let's talk about the percentage method first. It is exactly the same formula that we have already studied. It is the percentage change in quantity demand divided by the percentage change in the price. And percentage change in the quantity demand is measured by change in the quantity demand divided by the quantity demand. I told you on the first slide कि percentage change को कैसे measure करते हैं, to measure the change divided by the base quantity. And similarly for the price, you measure the change in the price and divide it by the basic price. And for the percentage, you multiply it by the 100 and put the percentage sign. अगर इसको हम simplify करें, 100 को cancel out कर दें, percentages को cancel out कर दें, then we can have it in this form, change in QD over change in P multiplied by P over QD. You know it very well, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है कि अगर हम यहाँ पे इस QD को हम दूसरी तरफ लिख दें, लाइक डेल्टा QD ओवर QD, तो इधर क्या हो जाएगा, P ओवर डेल्टा P, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई के बजाय यहाँ पे डिवीजन का साइन डाल दे तो वो क्या हो जाएगा, QD ओवर P हो जाएगा। यू नो ऑल दिस। तो बुक्स के ऊपर समटाइम्स उसने इस तरह का चेंज करके फार्मूला लिखा होता है, डोंट गेट वरीड अबाउट इट। समझ आई? Yes. यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि वो Q को उधर ले जाए और डेल्टा P को इधर ले जाए तो फार्मूले की सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। It's just mathematics trick. So here is an example, price changed from 10 to 12 and quantity demand fell from 50 to 49. So our basic price is 10 and the change in price is 12 minus 10, that is 2. Minus. No, not minus, it's positive. Increase is always a positive change. And you always calculate it by final value minus the initial value. And then the quantity demand, initial quantity demand was 50 and the change in the quantity demand is 49 minus 50, that is minus 1. Yes, sir. Got it? So now we plug it in the formula and the formula gave us the answer of minus 0.1. Got it? Simple method. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Students, इसका जो minus का sign है, we normally ignore it. Why? It just shows the relationship. The relationship between price and quantity demand is it always negative? It's always negative, right? Yes, just in case of a specific kind of good which we call as giffen goods, उसके केस में ये positive होता है, otherwise it's always. हाँ सर, वो giffen goods में होता है, सही। हाँ, अच्छा, just give me a reminder, giffen good के बारे में एक दफा एक क्लास में मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था और मैंने इसका बड़ा डिटेल्ड नोट लिखा था। Give me a reminder, I will try to find out that note and will share it with you on the LMS. तो उसको पढ़ लेना। Yes, sir. That's a very good note, I believe, मुझे लगता है कि मैंने अच्छा, ठीक है। So अच्छा, अब जब हम बेटा बात करते हैं ना ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, तो हम इस साइन को इग्नोर करके इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को देखते हैं। मींस अगर इसकी वैल्यू होती -1.7 तो हम माइनस का साइन इग्नोर कर देते हैं। वी वुड हैव सेड कि इट्स इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, इट मींस इट इज इलास्टिक गुड। प्राइस इलास्टिक। हाँ, यस, ऑल्दो वो माइनस के साइन का यू नो कि वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, बट वी इग्नोर द नेगेटिव साइन। एंड व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन? इट इज जस्ट बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड।
ठीक है, तो जब हम इसकी डिग्री को चेक करते हैं, इग्नोर दैट साइन, वी take the absolute value, and on the basis of that absolute value we just decide whether it is elastic good or inelastic. Fine. Yes, sir. यस सर. Okay. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये आटे की कीमतें बहुत बढ़ गई है ना? फ्लोर प्राइस इज टू हाई these days. Yes, sir. आप में से किसने रोटी खाना कम की है? बिल्कुल नहीं सर. So it means जो necessary goods होंगी, सर डबल कर दिया है। अच्छा, और अगर आटा बहुत सस्ता हो जाए, 10 रुपए किलो मिलना शुरू हो जाए, धन आप में से कौन है जो 20-20 रोटियां खा जाएगा एक टाइम? अमाद सर. घी। मोहम्मद अमाद खाएगा. so normally the necessities they do not, उनकी जो elasticity होती है वो इतनी responsive नहीं होती, so they are mostly inelastic. सर ये परसेंटेज ऑफ इनकम पे डिपेंड करेगा. It also depends on the nature of the good. ठीक है, it depends on the nature of the good as well. इनकम पे भी डिपेंड करेगा, nature of the good पे भी डिपेंड करेगा. ठीक है, जैसे necessities है, for example, जैसे मैंने अभी बात की वीट की, इसी तरह there are medicine है, for example. If the medicine prices changes too much, you cannot stop taking the medicines. You have to buy those. Got it? यस सर। ये माइक पता किसी का ऑन है, काइंडली यार ये कौवे किसने बिठाए हुए सर हैं? कौवे की आवाज आ रही है. मुझे अच्छी लगती है ये नेचुरल आवाजें, लेकिन इस वक्त इतनी अच्छी नहीं लग रही. सर ऐसा लग रहा है पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं. ये फरहान अफजल है। मैं तो वैसे पढ़ता भी रहा हूँ गाँव में, स्कूल में ना. Can tell you this. हम भी अभी हॉस्टल में बैठे हैं। हॉस्टल वाले तो खैर ये भी ये जरिया आपका कौवा है। पढ़ लेते हैं. चले, नाउ लेट्स कम टू द ज्योमेट्रिक मेथड. ज्योमेट्रिक मेथड पे हम क्या करते हैं कि जो हमारी डिमांड कर्व होती है वी एक्सटेंड इट और हम उसको दोनों एक्सिस से मिला देते हैं इफ इट इज स्ट्रेट लाइन. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डिमांड कर्व अगर छोटी भी होती तो मैंने स्केल रखना था और इसको दोनों एक्सिस से मिला दें. ठीक है, फर्स्ट वी जॉइन इट विद बोथ एक्सिस, विद द क्वांटिटी डिमांड एक्सिस x एक्सिस एंड विद द प्राइस एक्सिस y एक्सिस. देन तब हमने वो पॉइंट पिन पॉइंट करते हैं जिस पॉइंट पे वी वांट टू मेजर द इलास्टिसिटी. अब उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं टुवर्ड्स x एक्सिस एंड देन वी मेजर द डिस्टेंस टुवर्ड्स y एक्सिस. लाइक हम E से A का डिस्टेंस पहले मेजर करेंगे स्केल से एंड देन वी विल मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम E टू B विद द स्केल. ठीक है, एंड वी विल डिवाइड इट और डिवाइड करके हमारे पास एक आंसर. क्लियर? यस सर. Sir, can you repeat geometric method kindly? Okay, I do. There is any question? सर ये पॉइंट ई हमने कहाँ से लिया? ये रैंडमली मार्क किया है? Randomly. Just our own choice. ठीक हो गया? So now again आपके पास डिमांड कर्व है. Let's assume it's a straight line demand curve. आपने क्या करना है, उस डिमांड कर्व के ऊपर स्केल रखना है. You just put a scale on that demand curve, extend it and join it with both axes. First. Second, just take a point, mark a point where you want to measure the elasticity. Now measure the distance from that point to x intercept and from that point to y intercept. Fine. And now just divide it. X distance towards x axis divided by distance towards y axis. Clear?
Yes, sir. Now Yes, let's sir. say it is 25. Yes. Okay. Let's assume that the lower distance is 25 and upper distance is 5. So we can just divide it 25 over 5 and answer is 5. So this is the elasticity of demand. And it is more elastic at this point. Clear? Sir, Yes. sir. So what do we mean by more elastic? By more elastic, we mean a small change in the price will result in a very, very large change in the quantity. Okay, thank you. Now, अब आप देखो, if you would mark the point in the middle of the line, तो आपका जो lower distance होगा towards x-axis, that will be the same as the upper distance toward y-axis. So at the right at the midpoint, your elasticity will be equal to 1. Sure? सर थ्रू आउट डिमांड कर मतलब इलास्टिसिटीज चेंज होती है ना? Exactly. अगर आप ये पॉइंट नीचे ले लोगे, ठीक है, लोअर साइड पे, then your distance to x-axis will be smaller divided by your distance to y-axis which is now larger. तो आप एक small number को एक larger number पे divide करें, your answer will be less than 1. And if you put the point on the higher side as we did in our example, then the distance toward x-axis, which is your what we say numerator, would be higher, and the distance toward y-axis, which is your denominator, will be smaller. So you will be dividing a higher value with a smaller number, and the answer will be greater than 1. सर हमारे पास सर ओरिजिनल पॉइंट कौन से सर जहाँ पे जो चेंज आ रही है वो पॉइंट तो यहाँ पे दिख ही नहीं रही सर। वो तो आपके अपनी मर्जी है ना, आप एक फर्म में हो, वो 1-1 रुपए की टॉफी बेच रही है, ठीक है, तो 1 रुपए से उसने 1.5 रुपीज की कर दी, 2 रुपीज की कर दी, ठीक है। आप उसके बाद एक बड़ी फर्म में चले गए, आप चले गए लेट्स से होंडा में, और होंडा में आप जो है ना होंडा सिविक को देखने लग गए, और सिविक में आपकी जो प्राइसेस है वो चेंज हो रही है फ्रॉम 20 लाख टू 23 लाख टू 27 लाख, ठीक है। वहां से आप फिर चले गए BMW बनाने वाली कंपनी में। सो इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। ओके सर। Jawad, we have to divide the length of the line. You put a scale on the line, measure it, and then divide it. Okay, sir. Just look at this. EA, from E to A, just put a scale on this and you will get the number. And then put a scale from E, measure it till B, and then write down that number. ओके सो और जब अगर हमारा ये पॉइंट बिल्कुल जीरो नीचे होगा तो इलास्टिसिटी जीरो, और बिल्कुल ऊपर होगा तो इलास्टिसिटी विल बी इन्फिनिटी. सो एज यू मूव अपवर्ड on the curve, your elasticity is increasing, and this is very very important, especially जब हम monopoly and monopolistic competition और ये cases पढ़ेंगे, वहां पे price determination करते हुए we have to look at the elasticity as well. Now the curve, ठीक है, किसकी फरमाइश थी ये कर्व वाली? Who was asking for this? मैं पूछ रहा था सर। हाँ तरीके, चलो मैंने कहा बंदा जाग रहा हो. So on the curve we put a point. ये पॉइंट आगे इस पे इलास्टिसिटी हमने मेजर करनी है. Again we put this point by our own will. हमारी अपनी मर्जी है कहाँ पे लगाए. अब क्या करना है, इस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. एंड टेंजेंट का क्या मतलब होता है? जो आपकी कर्व को जस्ट टच कर रहा हो एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट, वो उस पे जस्ट उसको टच कर रहा हो, ये इस तरह की लाइन. देन यू मेजर द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन. Clear? Yes, sir. Yes, sir.
तो टेंजेंट के बाद वही सेम फार्मूला जो भी हमने पढ़ा है वो पीछे, सेम 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 प्रोसेस। सेम एग्जैक्टली द सेम। या सर कर्व को पॉइंट वाले मेथड से नहीं किया जा सकता मेजर? वो भी कर सकते हैं, पॉइंट वाले मेथड से हम हर एक को कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ज्योमेट्रिक से भी सबको कर सकते हैं। सही, थैंक यू सर। वहां पे तो आपके पास यू हैव द नंबर्स, so you don't need to worry whether it will be a curve or whether it will be a straight line. You just have the numbers, plug in those numbers into your formula and you can get the answer. Simple. यस सर। Okay, so now we are to arc elasticity. So we have almost 10 12 13 minutes. So arc elasticity क्या है? We use this when there is a significant change. तो प्राइस में भी काफी चेंज और क्वांटिटी डिमांड में भी काफी चेंज है, ठीक है। अब अच्छा, एक तो ये बात भी होगी कि ये रिलेटिव मेजर्स है। फॉर एग्जांपल कोई टॉफी है, उसकी प्राइस 5 रुपीज से 8 रुपीज हो गई, तो देन इट इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन दैट प्राइस, ठीक है। मोर देन 50% का चेंज आ गया। बट एक BMW है, उसकी प्राइस जो है वो 50 लाख से 50 लाख और 50 रुपीज हो गई, तो इट्स एन इनसिग्निफिकेंट चेंज। So it doesn't depend upon the value, upon the absolute value. It depends कि आप इसके पहले क्या प्राइस थी और अब क्या आया, तो क्या चेंज जो है ना वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, नंबर नहीं है, चेंज इज इम्पोर्टेंट, चेंज इज सिग्निफिकेंट और नॉट। परसेंटेज चेंज। Exactly. So now for the arc elasticity again we have it's so we can have it in this kind of a situation where there are two distinct points, two very separate points, and we measure the change के उधर कितना आया और उधर कितना आया। Again we use two formulas. One is the midway formula. ये जो midway formula है, midpoint formula है, this is actually a slight modification of the formula that we studied previously. उस फार्मूले के अंदर एक छोटा सा इश्यू है, उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए एक स्लाइड मॉडिफिकेशन की, एंड दैट मॉडिफिकेशन रिजल्टेड इनटू दिस मिड पॉइंट फार्मूला। अगर हमारे आज के लेक्चर में टाइम हुआ, आई विल टेल यू द प्रॉब्लम इन दैट फार्मूला, एंड देन ये अगर नहीं टाइम हुआ तो फिर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में रिमाइंड करा दीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट हम जो हमारा बेसिक काम है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो इन दिस केस हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड है ना, उसको हम पहले तो डिवाइड कर रहे थे ना बेसिक वैल्यू के ऊपर, डेल्टा क्यू ओवर क्यू, एंड द क्यू वाज द फर्स्ट वैल्यू। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू से नहीं डिवाइड करेंगे, हम उन दोनों की एवरेजेस से डिवाइड करेंगे। मींस डेल्टा क्यू डी मींस Q2 माइनस Q1, यही होगा ना, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। एंड हम इसको डिवाइड करेंगे, इनिशियल वैल्यू से नहीं करेंगे, वी विल डिवाइड इट बाय द एवरेज ऑफ द चेंज, यानी Q2 प्लस Q1 ओवर 2। एवरेज एंड फाइनल वैल्यू मतलब जो पहले जैसे पहले 50 रुपीस थी और अब 55 हो गई, तो हम इन दोनों की एवरेज लेके उससे डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली हम उसके मिड पॉइंट से डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। सेम इज द चेंज इन द प्राइस साइड, डेल्टा पी ओवर पी पहले था, अब यहाँ पे क्या हो गया है, P1 प्लस P2 ओवर 2, ठीक है। तो यू हैव ऑल ऑफ यू आर ब्रिलियंट इन मैथमेटिक्स, यू नो 100 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंटेज भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो इट विल जस्ट रिमेन डेल्टा क्यू डी ओवर Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय डेल्टा P डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे या इधर उधर चेंज करना, यू कैन प्ले दैट वेरी वेल। ये फार्मूला बताओ मुझे, क्लियर हो गया? यस सर। सर एक दफा फिर रिपीट कर देंगे प्लीज। सर जी सर ये ज्यादा ही ज्यादा अगर आप Q1 Q2 जो है वो ग्राफ के ऊपर मार्क करें, वो करते हैं, आगे जाके करते हैं, ठीक है।
वैसे ये आपकी सजेशन अच्छी है, मुझे याद रही तो मैं स्लाइड का एंड पे इधर भी मार्क कर दूंगा। इट्स अ गुड सजेशन, बट आई सर गेस आगे मैंने थैंक mark यू किया। सर। ठीक है, सर एक दफा जरा शॉर्ट रिपीट कर देंगे प्लीज। अच्छा। चलो बेटा, ऑन अ लाइटर नोट, मुझे खुद अपनी आवाज इतनी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं आप क्यों मेरी आवाज के इतने फैन हो गए हो सारे जो बार बार फरमाइश करते हैं दोबारा दोबारा। ठीक है। सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। Okay. So again, midpoint formula is slight modification of the mathematical formula that we used in point elastic method. वो modification क्या है कि हम जब डिवाइड करते हैं चेंज को, तो वो हम डिवाइड इनिशियल वैल्यू से करते थे। अब we should not divide it with the initial value. Instead, we shall divide it with the average of the value. जो चेंज आया है उस चेंज की एवरेज से हम डिवाइड करेंगे। एंड एवरेज कैसे निकालते हैं? यू प्लस द क्वांटिटीज एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द क्वांटिटीज। अब यहाँ पे 2 क्वांटिटीज है, सो आप दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे। एंड सेम फॉर द प्राइस, द चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द एवरेज चेंज इन द प्राइस। सो एवरेज कैसे आएगा? P1 प्लस P2 डिवाइड बाय द 2। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स कहती है कि उधर भी डिवाइड बाय 2 हो रहा है, इधर भी डिवाइड बाय 2 हो रहा है, सो 2 विल कैंसिल आउट, 100 विल कैंसिल आउट, परसेंटेज विल कैंसिल आउट, एंड इट्स द simplest form, which is change in QD over Q1 plus Q2 divided by change in P over P1 plus P2. Fine. ओके सर, थैंक यू। Okay, so अब हमारे पास ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमने मार्क किया हुआ है। नहीं, यहाँ पे Q1 Q2 में मार्क कर देता तो वो ज्यादा अच्छी बात है। अगेन इट्स बेटर। लेट्स अज्यूम के प्राइसेस 15 से, आई डोंट नो यहाँ पे अब मैं वो यूज कर सकता हूँ या नहीं। आप एक दिन एक स्टूडेंट ने यूज किया था, बट हाँ ये आ गए हैं। एनोटेट कर देते हैं वो। लेट्स से दिस वे जी अवैस भाई। एंड दिस वे। सो this is our P1 and corresponding to this is our Q1. Fine, and this is our P2 and corresponding to it, this will be the Q2. So now the change in QD will be second value minus the, yes, सेकंड वैल्यू जो है 30 ली हुई है, नीचे आपने फर्स्ट वैल्यू 30 ली हुई है। असल में एक मिनट सर एरोज थोड़े नहीं, invalid एरोज हैं। ये अपोजिट हो गए, टोटल अपोजिट हो गए। एक्चुअली प्लस के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं होगा ना, डिफरेंस विल बी इन द माइनस, तो मुझे माइनस का साइन करना चाहिए था। दिस इज P2 and this is P1, and corresponding to this is Q1 and corresponding to P2 this is Q2. Thank you for this correction. Okay, so now you can see प्लस में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, आप 30 प्लस 20 करें या 20 प्लस 30 करें, माइनस एक्चुअली मैटर्स। सो प्राइस 20 से 15 हुई, डिमांड 20 से 30 हो गई। सो प्राइस में चेंज कितना आया है? चेंज इज 20 to 15, तो -5 का चेंज आया है। और क्वांटिटी में कितना चेंज आया है? 20 to 30, दैट इज 10 का चेंज आया है। ठीक है, सो आप यहाँ पे वो प्लग इन करते जा रहे हो, जब प्लग इन करके आपने फाइनली वैल्यू डिराइव की, सो इट इज -1.4। अगेन we'll ignore the minus sign and we will just concentrate it अभी आएगा ना actual यार, पहले से ही। और क्या हो गया, किसके साथ लड़ रहे हो?
अच्छा, ये समझ आ गया? यस सर। ओके 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 सर जी। यस, okay, now the total expenditure or total revenue method. Actually, revenue and expenditure, it is just the matter of from where you are looking at. अगर आप कंज्यूमर साइड से देख रहे हो तो दिस इज योर एक्सपेंडिचर, और अगर आप प्रोड्यूसर साइड से देख रहे हो तो दैट्स योर रेवेन्यू। आप शॉप पे जाके जो पैसे खर्च करते हो दैट्स योर एक्सपेंडिचर, बट इट्स द रेवेन्यू ऑफ द शॉपकीपर। सो आप किसी भी साइड से देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू इज normally calculated by P into Q, price into the quantity. So अगर price and quantity move in the opposite direction, opposite direction का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर प्राइस इंक्रीज करे और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर जाए, ठीक है, तो अब हम इसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की डायरेक्शन को नहीं देखेंगे, हम एक्चुअली देखेंगे टोटल रेवेन्यू की डायरेक्शन को। ठीक है, हम उसको टोटल रेवेन्यू के अंदर जो चेंज है उसको हम देखेंगे विद रिलेशन टू द चेंज इन द प्राइस। अगर तो प्राइस इंक्रीज हुई है, प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा? योर क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज। और अगर क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा डिक्रीज आ गया, ठीक है, तो क्या होगा? कंपनी को इससे फायदा होगा या लॉस होगा? लॉस होगा। प्राइस उसने थोड़ी सी इंक्रीज की, लेट्स से 10% प्राइस इंक्रीज की, बट उसकी जो डिमांड है ना वो 50% फॉल होगी। सर लॉस होगा। Yes. सर लॉस होगा, फिर उसको प्राइस So नीचे the लानी so the पड़ेगी। revenue लॉस होगा सर। so the revenue will fall, and it is the case of elastic demand कि क्वांटिटी डिमांड का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, so in the case of elastic demand, prices and total revenue move in opposite direction. Secondly, अगर आपने प्राइसेस इंक्रीज किए, you increase the prices, बट उससे क्वांटिटी डिमांड आपने लेट्स से 20% प्राइसेस इंक्रीज कर दी, बट क्वांटिटी डिमांड में बिल्कुल स्मॉल सा डिक्रीज आया, लेट्स से 5% का डिक्रीज आया, तो इसका मतलब है प्राइसेस के इंक्रीज से कंपनी को क्या होगा? सर रेवेन्यू इंक्रीज सर फायदा हुआ है क्योंकि फायदा होगा, बेनिफिट होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू बढ़ गया। तो इट इज द काइंड ऑफ इनइलास्टिक गुड। और अगर दोनों का रिस्पांस सेम होगा, यस सर। तो इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू विल रिमेन द सेम। सो जस्ट फोकस ऑन इफ if the direction of change in price and the total revenue is opposite, then it is elastic. If it is same, then it is inelastic. और अगर रेवेन्यू पे चेंज ही नहीं आ रहा, then it is unit elastic. Fine. सर इसमें हम लोग परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक नहीं पढ़ रहे। परफेक्टली इलास्टिक एक्चुअली हम उसको कहते हैं जिसकी जो है ना वो इलास्टिसिटी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो, और परफेक्टली इनइलास्टिक हम उसको कहते हैं जिसकी इलास्टिसिटी जीरो हो। सो वो बहुत कम चीजें होती हैं, ज्यादातर चीजों में थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आ जाता है। सो इसलिए हम परफेक्ट के वर्ड को यूज करने से अवॉइड करते हैं। सर ये इन्फिनिटी की कोई एग्जांपल दे दे। एग्जैक्ट एग्जांपल तो बेटा नहीं है, बट क्लोज टू इन्फिनिटी हो सकती है। वो ये हो सकती है कि व्हेन यू हैव सो मेनी फर्म्स और हर फर्म बिल्कुल एक ही तरह की गुड प्रोड्यूस कर रही हो, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ आइडियल सिचुएशन एक्चुअली, कि हर फर्म बिल्कुल एक जैसी गुड प्रोड्यूस कर रही है एंड देयर आर सो मेनी फर्म्स। तो अब कोई भी फर्म प्राइस को अगर लेट्स से 1 रुपया भी चेंज करेगी ना, तो सारे कंज्यूमर उसके शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी तरफ। ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। एग्जैक्टली, तो बट वो एक आइडियल सिचुएशन है। यस ठीक है, फिर हम सर उसकी यस सर पेप्सी और कोका कोला की एग्जांपल ले सकते हैं? ले सकते हैं किसी हद तक, बट कुछ लोग होते हैं बेटा जो इवन पेप्सी और कोक में भी, आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मेरी बहुत सर उसमें प्रेफरेंस होती है लॉयल्टी कोक, होती है। मेरी बहुत प्रेफरेंस है कोक की। मुझे कोक ना मिले तो मैं पेप्सी नहीं पीता, फिर मैं कुछ और पीता, ठीक है, और मुझे कोक मिले तो वो ऑलिगोपोली होती है। ट्रैवल भी कर लेता हूँ। सर क्या पीते हैं उसके अलावा आप? मुझे टेस्ट में बहुत डिफरेंस लगता है इन दोनों की।
और मेरे आगे तो कोई पता बात करे ना, इनका टेस्ट सेम है, तो मैं कहता हूँ अपने टेस्ट बड़ी जाके चाहिए। सर नोकिया के एग्जांपल ले सकते हैं? बेटा नोकिया की एग्जांपल लोगे तो उसको कंपेयर किसके साथ करोगे? सर ये जैसे एप्पल के साथ कर सकते हैं हाँ, तो अगेन या सैमसंग। सेम प्रोडक्ट नहीं है बट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल सर वो एग्जैक्टली टेस्ट का टाइम होने वाला है। यस। सो चलें इस बात को हम इधर ही करते हैं। अच्छा, इसके डिटर्मिनेंट्स को हम बाद में करेंगे, और ये मुझे याद करा दीजिएगा, मैं इसकी जरा टेबल भी डाल दूंगा टोटल एक्सपेंडिचर की, एंड आई विल टेल यू फ्रॉम द टेबल के ये किस तरह होती है। यहाँ पे तो डायरेक्ट मैंने रिलेशनशिप लिख दी है, वहाँ पे मैं आपको टेबल से ये बता भी दूंगा कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप किस तरह से आ रहा है, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट्स को मैं ब्रीफली जस्ट जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सिंपल बात है, अगर किसी चीज के सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा होंगे सो उसकी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो आप यू विल एज ए कंज्यूमर यू हैव द ऑप्शन कि आप उसको छोड़ के दूसरे की तरफ चले जाओ। सो उसकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत रिस्पॉन्स होगा। और अगर किसी ने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी कम की है तो अगर उसके 20 सब्स्टिट्यूट है मार्केट में तो 20 के कस्टमर्स अब इसके पास आ जाएंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे तो इलास्टिसिटी हायर होगी। सेकेंड इज इम्पोर्टेंस। जो चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वी नॉर्मली डू नॉट गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू देयर प्राइस। हम कहते हैं ये चीज लेनी है, लाजमी लेनी है, बस जितने की मर्जी। सो दैट मीन्स वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? वीकर होगी, लेसर होगी। बजट शेयर हम देखते हैं किसी चीज का हमारे बजट के अंदर कितना शेयर है, टोटल शेयर। अगर किसी चीज का हमारे बजट के अंदर शेयर ज्यादा, इट मींस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और अगर उसका हमारे बजट के अंदर शेयर कम है, इट मींस दैट इज लेस इम्पोर्टेंट। और जब मोर इम्पोर्टेंट होती है तो फिर उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है, लेस इम्पोर्टेंट होती है देन इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर। टाइम डायमेंशन, अगर शॉर्ट टर्म का है तो फिर सम टाइम इलास्टिसिटी का रिस्पांस बहुत ज्यादा आ जाता है, बट लॉन्ग टर्म में इलास्टिसिटी का रिस्पांस कम होता है। फॉर एग्जांपल टोमेटो प्राइसेस इंक्रीज हो गई तो फॉर द शॉर्ट टर्म आप ये कर सकते हो कि घर में हांडी बनाते वक्त आप कुछ और चीजें डालो, लाइक केचप डालो, दही डालो, और चीजें डालो। बट अगर वो लॉन्ग टर्म प्राइसेस वही रहेंगी तो फिर बंदा कहता है यार इसमें कौन सा कम हो गया, ठीक है ले ही लो यार, देखी जाएगी, ठीक है, अल्लाह मालिक है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर मैं इनिशियली बात कर चुका था, लेकिन मैं इसके ऊपर दोबारा बात करूंगा जरा ज्यादा डिटेल से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम। सो वी आर एंडिंग अप आवर लेक्चर हियर। इसको मैं थोड़ी सी ये जो एक तो करेक्शन आपने नोट कराई है ये करके एंड आई विल पुट इट ऑन फाइन। जी सर। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। यस I'll do Sir, yes sir, where we can find the quiz on LMS? क्विज की टैब नहीं आ रही? सर आ रही है टैब, लेकिन उसमें अभी तक आ रहा है कि अभी तक आया नहीं है। हाँ, वो 3:30 पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। सर तो बस क्लास खत्म करें, 3 मिनट तो तो खत्म कर दिया बेटा, आपके कहने से पहले मुझे पता था तुम ये कहने वाले हो। अच्छा सर, थैंक यू। ओके ओके, खुदा हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, गुड लक। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आई एम एंडिंग इट।